Good morning, students. So we have come to the concluding portion of the Renaissance, and so today we'll be discussing about the causes of Renaissance in Europe. अब हम चैप्टर के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं और आज हम यूरोप में पुनर्जागरण के कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोपीय पुनर्जागरण किसी एक कारण का परिणाम नहीं था, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे कारण थे और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे संयुक्त कारण थे जिसके कारण पुनर्जागरण हुआ यूरोप में। तो उसमें सबसे पहला कारण था धर्मयुद्ध, जिसे क्रूसेड्स कहा जाता है और क्रूसेड्स कहा जाता है। ईसाइयों के पवित्र धर्मस्थल जेरूसलम पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था और इसको मुक्त कराने के लिए इनके बीच एक बहुत लंबा धर्मयुद्ध चला। इसी धर्मयुद्ध के प्रभाव यह हुआ कि यूरोपवासी जो है वे पूर्व के एशियाई देशों की सभ्यता एवं संस्कृति में के संपर्क में आ गए और इस प्रकार जब वे संपर्क में आए तो उनका बौद्धिक क्षितिज अधिक विस्तृत हो गया और उनके कुछ नवीन जब उन्होंने अनुभव प्राप्त किया तो इससे उनके मस्तिष्क पर जो भी अंधविश्वास का प्रभाव था या कह सकते हैं, या जो भी चर्च का प्रभाव था, ये सारे जो प्रभाव थे, अंधविश्वास था, ये दूर होने लगा और यूरोपवासियों ने फिर ये अरबों के भी संपर्क में आए और इसे यूनानी दार्शनिक जैसे अरस्तु हो गए, अरस्तु के ग्रंथ, अरबी अंक, बीज गणित जैसे और कागज बनाने की कला आदि उन्होंने सीखा और इस प्रकार इस बौद्धिक ज्ञान ने उन्हें ईसाई धर्म के संकीर्णता और मध्ययुगीन अंधविश्वासों से आज़ादी दिलाई। तो इस प्रकार ये कारणों से वे लोग इस अवस्था में वे अब अंधविश्वास से दूर आते हैं और तर्क के आधार पर वे अपने विचारों को प्रकट करने लगे, उनमें विवेक शक्ति उत्पन्न हुई और इस प्रकार परिणाम स्वरूप यूरोप में पुनर्जागरण संभव हो गया। सो द वेरी फर्स्ट रीजन इज द क्रूसेड्स, as this is the holy war which was fought between the Christians for the Holy Land Jerusalem between the Turks, and in order to free the land Jerusalem from the Turks, a very long war took place known as Crusades. One of the important effects of these Crusades was that the Europeans, they came in contact with East Asian people and they accepted and came in contact with the culture and civilization, and they developed a new horizon, new mental outlook. Uh, Prior to that, they had a great influence of church and blind faith, which slowly became weak, and thus the Europeans also came in contact with the Arabs, and in this way, the European philosophers, the books of Aristotle, the Arabic numerals, algebra, etc., and the art of making paper. I mean, these all they learned all this, and this helped in the intellectual development, and thus they became free from the blind faith of church, and thus in this way this led to the rise of Renaissance in Europe. दूसरा कारण है व्यापारिक समृद्धि। जैसा कि हम जानते हैं, पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है वो इटली में हुआ और इसका कारण यह है कि धर्मयुद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्व और यूरोप के बीच जो मध्य जो था व्यापारिक प्रगति हुई, इसने इटली के शहरों को बहुत संपन्न बना दिया। अनेक यूरोपीय व्यापारी जेरूसलम तथा एशिया माइनर के तटों पर स्थायी रूप से बस गए और इस व्यापार से इटली के व्यापारिक नगर, इटली के जैसे व्यापारिक जो महत्वपूर्ण नगर थे जैसे मिलान, वेनिस, फ्लोरेंस ने बहुत लाभ उठाया और यहाँ के व्यापारी पूर्वी देशों से प्राप्त माल को यूरोप पहुंचाने लगे। इस प्रकार इस व्यापारिक वर्ग ने पुनर्जागरण को बहुत ही सहयोग दिया। व्यापारी वर्ग ने चर्च की प्रभुसत्ता को भी चुनौती दी और इन्होंने व्यापारिक समृद्धि से नए नगरों का भी उदय हुआ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ये केंद्र बने और इन केंद्रों पर विभिन्न व्यापारियों का आगमन शुरू हुआ और नए नए विचारों के साथ आदान प्रदान हुआ। इससे पुनर्जागरण को काफी बल मिला। The second reason is the progress in trade, as the Renaissance had first started in Italy. It was the most important result of this reason for this was because due to the Crusades, the East and the European, they had established trade relations,
and this made the towns of Italy very uh, wealthy, and many of the towns of Italy, basically Milan, Venice, Florence, they became quite great centers of trade. And in this way, this trading class, they supported the Renaissance as they challenged the sovereignty of the church, and due to this, the trade uh, progress and prosperity, there was rise of new towns and cities which became the centers of national trade. And so in these places, these traders, they exchanged their views, their ideas, and developed a critical outlook and critical mind of mint. So in this way, they gave way to Renaissance. तीसरा कारण है कागज एवं छापे खाने का प्रयोग। जैसे कागज बनाने की कला यूरोप वासियों ने अरबों से सीख ली थी और अरबों ने चीन से सीखी थी। और गुटेनबर्ग ने लगभग जब छापे खाने का आविष्कार किया था तो उन्होंने बाइबल की 150 प्रतियां छापी थी। इससे इसको काफ़ी साहित्यिक सृजन को काफ़ी बल मिला था, और इस आविष्कार के परिणाम स्वरूप क्रांतिकारी परिणाम हुए। पुस्तकों की संख्या में वृद्धि हुई, इनके मूल्य में भी कमी आई, और अब आम आदमी के पहुंच में आई, और ये प्रमुख स्रोत पहुंचा। अब ये लोग पुस्तक पढ़कर सीधे बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। पहले ये ऐसा नहीं था, पहले पुस्तकें के मूल्य बहुत ज़्यादा थे, और इसीलिए हर व्यक्ति जो भी कहीं सुनाई बातों पर ही विश्वास कर सकता था, लेकिन अब वो खुद स्वयं पढ़कर सच्चाई तक पहुंच सकता था। सो द थर्ड रीजन इज द इन्वेंशन ऑफ पेपर एंड द प्रेस। As paper, the art of paper was learned by Arabs from China, and from Arabs, the Europeans learned this art. And as Gutenberg had invented the printing press, he printed about 150 copies of Bible, and apart from it, many new changes came into being, and it had a revolutionary impacts. A large number of books were published, and on the other hand, its price also was reduced, as earlier, because of the scarcity of books, very few books were published, their prices were very high, and it was not affordable for a common person. But now they could easily afford the book, and easily it was affordable for them, and they could themselves read and know about the truth. So in this way, this invention of printing press and paper, they paved a great way for Renaissance. चौथा कारण है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अधिकार किया, और एक तरह से उसने पुनर्जागरण को सहयोग दिया। जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हुआ तो तुर्कों के अधिकार के कारण यूरोप का स्थल मार्ग से होने वाली पूर्वी व्यापार जो है वो बंद हो गया, और इसलिए यूरोपवासी नए जल मार्ग खोजने के लिए बहुत अग्रसर हुए, और इसी के परिणाम स्वरूप बहुत सारी भौगोलिक अनुसंधान और बहुत सारे खोज की गई, जिसके परिणाम स्वरूप दिशा यंत्रक जैसे कुतुबनुमा, एस्ट्रोलैब, इन चीज़ों का आविष्कार हुआ, जिसे जल मार्गों की खोज में अहम भूमिका अदा प्रदान की। इसी प्रकार फलस्वरूप अमेरिका की खोज हुई, और अनेक नए देशों के से यूरोपवासी जो हैं वे परिचित हुए। और जैसे पिछले ऐसा माना जाता है कि बहुत से वर्षों से चले आ रहे कुस्तुनतुनिया जो था वो ज्ञान और दर्शन और कला का एक बहुत महान केंद्र था, और जो यहाँ पर तुर्कों ने अधिकार किया तो यहाँ के जो विद्वान हैं, दार्शनिक हैं और जो कलाकार हैं, वे भागकर यूरोपीय देश भाग जाते चले आते हैं, और यहाँ पर अपने कुछ पांडुलिपियों के साथ, साहित्यिक कार्यों के साथ वे इटली पहुँचते हैं, और इन विद्वानों के आने से इटली के नगर इस नवीन ज्ञान का केंद्र बन जाता है, और यूनानियों के इटली पहुंचने से पुनर्जागरण को नई शक्ति और उत्साह मिलता है, जिससे उसकी गति में आश्चर्यजनक तेजी आती है। तीसरा है मंगोल साम्राज्य का प्रभाव। 13वीं शताब्दी में मध्य एशिया में स्थापित मंगोल साम्राज्य के शासक कुबलई खां का दरबार विद्वानों का केंद्र था, और उसकी राजसभा में पोप के दूत, भारतीय बौद्ध भिक्षु, पेरिस, इटली व चीन के दस्तकार और भारत के गणितज्ञ एवं ज्योतिष शास्त्राचार्य सभी मौजूद थे। प्रसिद्ध वेनिस यात्री मार्को पोलो ने जब कुबलई खां के दरबार में पहुंचा तो उन्होंने अपने यात्रा विवरण में यहाँ की संस्कृति और सभ्यता का भी विवरण प्रस्तुत किया, और इसी को पढ़कर यूरोप वासियों ने भी पुनर्जागरण की भावना
उनमें उजागर हुई और मंगोलों के संपर्क से यूरोपवासियों को कागज, कुतुबनुमा, मुद्रण कला जैसे बारूद की जानकारी आदि मिली, तो इससे पुनर्जागरण को एक नई दिशा मिली. So the fourth reason is the fall of Constantinople, or the you can say in 1453 Constantinople was captured by Turks, and so this it restricted, or it blocked the way of the East and the Europeans, and thus the Europeans were forced or the compelled to find a new sea route, and thus this led to many geographical discoveries, many researches, and gradually in this way the compass, astrolabe were invented, and through the new sea routes they were able to there was discovery of America, and the European people were came to know the other countries through these inventions and discoveries. And as we all know that Constantinople was the main center of learning, of philosophy and art. When it was captured by the Turks, all the intellectual people, all the philosophers and the artists, and you can say they were all they migrated to Italy, and thus they came with all the literary works, and here uh, thus Italy became the new center of learning, or the new center of knowledge. And these Europeans, when they reached Italy, they gave a new joy, and new they propagated the new ideas, and thus in this way this led to the rise of Renaissance. The fifth reason is the influence of Mongol dynasty. In the 13th century, in Middle Asia, or Mid Asia, there was Mongol Empire whose king was Kublai Khan. In his mm, in his court, he had all sorts of learned people, like the ambassador of Pope, the Indian Buddhist monks, and the artisans of Paris, Italy, and China, the mathematicians, the astrologers of India as well. At this time, the Venice traveler Marco Polo, he came to Kublai Khan court, and here he saw all this, and in his uh, work he has written about the culture and civilization about this Kublai Khans of the Mongol court. This greatly influenced the Europeans, and this led to the Renaissance. And due to the contact with the Mongols, the European people were able to discover or invent the compass, the gunpowder, etc., and they came with all of this knowledge. So in this way, due to all these reasons, like crusades, the invention of press and invention of paper, the trade relations, trade progress, the fall of Constantinople, and the influence of Mongols, this paved way for Renaissance in Europe. इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप में पुनर्जागरण मुख्य रूप से धर्म युद्ध, व्यापारिक समृद्धि, कागज और छापे खाने के प्रयोग, वहीं कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार या मंगोल साम्राज्य के प्रभाव के कारण हुआ. So students, I hope you have followed. So that's all for today, and we have come to the end of this syllabus. Thank you.